Hello everyone, welcome to the next lecture on the CSIR NET and the GATE mathematics. Today I will explain you how you can solve each question related to the orthonormal in the 15-second time periods. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel. Since the today's topic is on the orthonormal and you must know I had uploaded the theory lectures related to the concepts and examples of the orthonormal and the orthonormal basis. You must watch these two lectures to understand the today's lecture in a very easier manner. You can find these two lectures under the channel name Dr. Harish Kar. Playlist is linear algebra. You can see the single value decomposition, orthonormal basis, Gram-Schmidt process, all are available in this playlist. अगर आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझना है, you must watch these two lectures in advance. Fine. Now, if I quickly recall you, the set of the vectors v1 up to vn is said to be the orthogonal if the vi dot vj is 0, or if you write in terms of the inner product, then we can say vi comma vj is my 0 for all I is not equal to j. On the other hand, vectors are said to be the orthonormal if they are orthogonal as well as the unit vectors. So you must say the orthonormal means the vector must be orthogonal and unit vector. Or in other words, you can say any vector, those vectors are orthonormal, they implies they are orthogonal, but converse may not be true. Fine, every orthogonal vector is orthogonal, but converse is need not be true. But the important question arises is how we can construct the orthonormal vectors. I will discuss the two different categories based on the nature of the VIs, whether they are my orthogonals or not orthogonal. If they are orthogonal, then you can easily construct into the orthonormal vectors by dividing the each of the VIs to its norm. V1 divided by norm of V1, V2 divided by norm of V2, and so on. On the other hand, if the vectors are not orthogonals, then we can utilize the Gram-Schmidt process for constructing the orthonormal vectors. And how you can construct them, I already explained you the Gram-Schmidt process and the various numerical examples. Another important concept when you look about the Gram-Schmidt process is the projections. Or if I explain you with the help of the example, you can clearly say what is a v1 dot v2, 2 plus 0 minus 2, which is 0. That means they are orthogonal vectors, and once they are orthogonal vector, you can construct divided by its norm. Can you find the norm of the v1? How you can find the norm of the v1? You can put the square of the each element. 1 minus 1 square is plus 1, 2 square is 4. That is my root 6. So that is root 6. So you have divided by root 6. Similarly, you can define the norm of v2, which is root of 4 plus 0 plus 1, that is root 5, which is defined as root 5. Fine. Similarly, if you consider another v1 and v2, then clearly say v1 dot v2, which is defined as 2 minus 1 minus of 2, which is my non-zero. That means the given set of the vectors v1 and v2 are not orthogonal. अगर वो orthogonal नहीं है, then you can never use the concept of the orthonormal vectors. Fine. For that case, we will utilize the concept of the Gram-Schmidt. The same kind of the examples I already explained you in the orthogonal and the orthonormal vectors. The most important concept when you apply the Gram-Schmidt process is the projection. What is the meaning of the projection is, if you have the vector say u, another vector is say my v, fine. The projection means you can find the shadow of the v on the u. There is a perpendicular, and this is called as projection. Fine. That is called as projection of v on u, which is defined as projection of v on u divided by its length, u comma u. Always remember students, whenever we can define
the norm of u comma u inner product, which is equivalent to the norm square. Fine. Another concept which we are needed is linearly independent. If you prove that the given set of the vectors are my orthogonal, then they are always linearly independent. But converse is not true. Again, we have seen in our previous slide that whenever you have the orthonormal vectors, every orthonormal vector is my orthogonal, and once they are orthogonal, that means they are my Li. But remember, converse need not be true. Converse need not be true. Last concept is that is the orthonormal basis or the orthogonal basis. Any set of the vectors Vi is said to be the orthogonal basis if satisfy the two properties. What is the meaning of the basis? The basis means you have to prove they span and the Li's. Fine. So you can say the vectors Vi's are my orthogonal and they are basis. Similarly, the vectors are said to be the orthonormal if the given set of the vectors are my orthonormal and they are basis. Clear? मैं फिर कह रहा हूं बच्चों आपको, you must watch the previous two lectures deeply. And the last very useful concept is, if you have the given set of the orthogonal bases, then you can write the y as a linear combinations provided the value of the C1, C2 and Cn. You can directly write the value of the C1 is y, coefficient of the C1 is V1. You can write as a y comma V1 divided by inner product of the V1. If you have the standard inner product, you can write as a y dot V1 divided by V1 dot V2. Similarly, how you can write the C2? Y with respect to V2, y with respect to V2 divided by V2 comma V2 and so on. Fine. If you have the standard inner product, you can write in terms of dot. If you have the inner product, you can write in terms of the inner product. But make sure this result is applicable only if you have the orthogonal vectors, otherwise not. मैं फिर कह रहा हूं बार बार, ये लेक्चर you must watch these two lectures in order to understand the today's lecture concept. चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं. उम्मीद करता हूं स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और कमेंट क्विकली से कर दो. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द ऑर्थोनॉर्मल. तो क्या रूल बताया मैंने ऑर्थोनॉर्मल के लिए? डॉट प्रोडक्ट v एंड u का क्या होना चाहिए? 0 और इसका नॉर्म क्या होना चाहिए? 1. फाइन. सबसे पहले चेक करते हैं x के साथ नॉर्म ऑफ x निकाल लें. फाइन. तो नॉर्म ऑफ x मतलब आई कैन राइट एज x कॉमा x, स्केयर लगा लेते हैं. फाइन. दैट विल बी 0 to 1 x इंटू एक्स, एक्स स्केयर. इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/3 विच इज नॉट इक्वल टू 1. तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया. और आप इसका डॉट प्रोडक्ट भी चेक कर सकते हो. लेट्स से 1 comma x. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? इंटीग्रेशन ऑफ 1 to x, x into dx. Integration is 1/2 which is my non-zero by the first one. So first option is cancelled. Look at the second. If I start from the inner product, fine, it is 1 to 0. It is √3 into x. Answer is √3/2 which is my non-zero. Second option is also cancelled. Look at the third options. If you find the inner product, so that will be 0 to 1 √3 2x minus 1. So that will be √3 is outside. That number is my x square minus x from 0 to 1. 1 minus 1 is 0, satisfied. We can check about the norm. Norm of the 1 into 1 is 1, satisfied. Norm of the 2x minus 1 into √3, that will be, norm is always a square. So if you put them 3 into 2x minus 1 square. So can you find the integration? 3 will be outside. 2x minus 1 cube. 3 into 2 from 0 to 1. If you substitute 1, that is a 1. If you substitute 0, that will be minus 1 divided by 2. That is my 1. So yes, it satisfies both the properties. Look at the last one. If you find the norm of the x minus 1 whole square,
Fine. So clearly say that number will be x minus cube. So if you substitute from the 0 to 1, that is 1 over 8 minus minus plus 1 over 8, which is my not 1. So fourth option is cancelled. C is the only right option of this problem. Consider the R cube. W is the subspace spanned by the orthogonal complement. जब कभी भी, always remember students, जब कभी भी orthogonal complement का नाम आए, whenever there is a concept related to the ortho complements that is denoted by W, always find the dimension. Dimension of the orthogonal complement is dimension of the vector space minus dimension of the W. In this particular example, V is my R cube, dimension is my 3, it is spanned by the single element, dimension is my 1. So that means dimension of the W orthogonal complement is 2, but you can see they are my 3. Fine. Now, which of the following is the basis? Basis means your target is to find the Li, but you can see from the fourth options, if I 1 and 2, that is a V2 is my twice of V1, that means they are the linearly dependent. So the option third option is also the cancel. Now another concept is whenever you are talking about the orthogonal, that means W and W, the inner product must be 0. Fine. अब W में आपका एलिमेंट गिवन है, you can check about the options. Let's say start with the B option. 1 0 minus 1 को 1 2 1 से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 1 plus 0 minus 1 which is 0 satisfied. Look at the second, 0 plus 0 minus 1 which is non-zero, B option cancelled. So that means the A option is the right one. How we can check about the A options? Find the dot product of the W and the W1. 1 plus 0 minus 1 satisfied, 0 plus 0 plus 0 satisfied. So that is the A is the right answer of the problem. हमेशा याद रखिए, whenever there is a concept of the orthogonal complement, use the dimension answer. Find the orthogonal projections. Find the projection of x square on M. What is the M is? 1. So what is the answer? Orthogonal x square on the 1. X square on 1 divided by 1 comma 1. So by using the definition, it is integration 0 to 1 x square divided by 1 into 1. So it's 1 over 3 divided by 1. 1 over 3 is the right answer of the problem. Fine. Similar, same तरह के concept already explained है in previous lectures में भी. Fine. अगर आप और examples चाहते हो. Okay, define M, dimension of the M निकालना है. Fine. ये 0 से क्या आपको दिमाग में आता है? 0 is always defined for the nullity. Fine. And whenever there is a nullity, you can apply the rank nullity theorem, that is dimension of R cube vector space minus rank of the S, because these are the element of the S. So how you can find the rank of the S? I can write the S is a matrix 0 1 1 1 0 1 minus 1 2 1. If you find the determinant 1 minus 2 minus 1, so that will be 0. Fine. So rank will be my 2, because आपको एक 2 by 2 का मैट्रिक्स मिल गया ना आपको. That means these vectors are my LD. Fine. So the dimension is my 1. 1 is the right answer. Second method, this is the first method. Second method is, if you look about the orthogonal complement definitions, so M is nothing but my M. Fine. Why? Because the dot, what is the meaning of the x dot y? 0. That means they are my orthogonal. And once they are orthogonal, you can look about the orthogonal complement. So what is the orthogonal complement? Dimension of the V minus dimension of the S. What is the dimension of the V is 3. Dimension of the S is, that is the rank of the S. Rank of the S is my 2, which is my 1. Again, B is the right answer of the problem.
U, V and W are the unit vectors, are the vectors in the inner product space satisfying. U and V are 0. That means U and V are orthogonal. Fine. This is given. U and W are not orthogonal. V and W are not orthogonal. Fine. U and V are orthogonal, that means they are Li. Fine. Then it is not necessary Li, because orthogonal, as I mentioned you, orthogonal implies Li, but converse need not be true. Again, they are not necessary Li. So look at that. U, V and W are necessary Li. That's a wrong option. Fine. और क्या बताया था मैंने आपको? अगर आपके पास ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं, if you have the orthogonal vector, how you can convert into the orthonormal? We can divide it by its norm. Fine. So U and V are my orthogonal. So I can say U divided by norm of U, V divided by norm of V are my orthonormal. Fine. And what is the norm of U? Norm of U is my 2, norm of V is my 2. And look at the second option. U by 2 and V by 2 are my orthonormal basis. Fine. Now look at the third options. W and orthogonal. That means your target is to prove W for U minus W. It must be 0. Fine. So let's look at the left hand side. I can written as 4 is outside, W comma V minus, fine. What is that? W and U? 1, and norm of it will be 2 square. Why? Because norm of W square I can written as W comma W, and inner product of the xy is always be the y comma x. So that is my 0. Yes, they are orthogonal. Fine. Look at the first option. Now it's a norm. W plus V minus U. So I can start with the square. It's a square plus B square plus C square plus 2AB minus 2BC minus 2. Fine. Now you can substitute. Norm of W is my 2. That's 4 plus 4 plus 4. Norm of V and W is plus minus 2. V and W, sorry, it's a V and W, it's a V and U. It's a V and U. V and U will be 0 and W and U will be 1. So the answer is 8, but we need as a 1. So it's I start with that 2. So that will be root of 8. Yes, it's satisfied. Answers are A, B and C are the correct answers. Okay, look at this another one. V is the inner product space with the dimension is 10. What does the meaning of that? That means X and Y are my orthogonal. Fine. Orthogonal means Li. And your target is to find the dimension of, can I write this number is X union Y, orthogonal complement? So now you can see it's orthogonal complement. So I can say the dimension of the V minus dimension of this X union Y. Fine. Or by using the definition of the orthogonal complement, collection of all those V elements such that inner product of the V with respect to X is 0 and inner product of the V with respect to Y is 0. Fine. Now how you can find? It's a 0. That means you can find the nullity. Dimension is 10. There are the two conditions. So 10 minus 2, which is 8. 8 is the right answer of the problem.
Because in this case, your target is to find the dimension of x union y, but we never know what is the x union y. Fine, so I can apply the definition of the orthogonal complement. You must watch about my lecture, basis and dimension, which is also available in this playlist. You can see dimension, basis and dimensions. Fine, which is a fully shortcut tricks how you can find the dimension of the problem. उम्मीद करता हूं वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करेंगे. Given the real subspace of the R4 is orthogonal complement, can you find the dimension of the W1? एक ही एलिमेंट है, dimension is 1, which is same as dimension of W2. Fine, तो आपको क्या बोला इन्होंने, dimension of, इसको मैं फिर से उसी तरह से लिख देता हूं, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है. फाइन, तो इसको क्या लिख सकता हूं, कलेक्शन ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स सच दैट v, x is my 0 and v, y is 0. तो x मैंने ले लिया, x is the element of the W1, y is the part of the W2. Fine, so dimension is R4. 4, how many conditions? There are the 2 conditions. 4 minus 2. 2 is the right answer of the problem. तो आप देखिए, इस सिर्फ इतना लिखना है आपको एग्जामिनेशन में, then you will get the full marks. Okay, look at the next one. Consider the usual inner product. What is the meaning of the usual inner product of the R4? That means it's a dot wise product, xi, yi. Let use the unit vector orthogonal to the subspace. इसका मतलब u, इसमें x ले लेते हैं, that must be 0. फाइन, तो क्या होगा आपके पास, बेसिकली u विल बी, कोफिशिएंट्स ले लेते हैं इसके, दैट इज माई 1 1 1 1. फाइन, अगर आप देखो x को x1 x2 x3 x4 लोगे तो डॉट प्रोडक्ट यही बनेगा आपका. बट यहां पे क्या बोला है, यूनिट वेक्टर. हाउ यू मेक देम ए यूनिट वेक्टर? आई कैन डिवाइड इट बाय इट्स लेंथ, 1 square plus 1 square plus 1 square plus 1 square, that is my 2. This is my u. Let v is there and the vector u are orthogonal. What is given to you? U, v minus alpha u, which is 0, is given to you. So now you can open them. U, v minus alpha is outside, u, u. So can you find the dot product of the given vector u and the given vector v? So that will be half is outside. It is my 1 minus of 2 plus 1 plus 1 minus alpha. What is the u? Is my unit vector, so that number is 1. So that means alpha will be my half. Your target is to find the alpha square, which comes to be 1 by 4. Hence up to the 2 decimal places, 0.25 is the right answer. Consider the inner product m ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट. तो सबसे पहले ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को लिख लेते हैं. डायमेंशन ऑफ द v 4 माइनस डायमेंशन ऑफ द m. सो कैन यू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द m? m is collection of all those x such that x1 minus x3 is equal to 0. So now right hand side 0, that means your target is to find the nullity of the m. So what is the nullity? Nullity of the m is basically the dimension of the m. So nullity means you can apply the rank nullity theorem. Is the element of the R4. 4 minus, there is one condition, 4 minus 1 is equal to 3. So the answer is 4 minus 3, which is 1 is the right answer of the problem. क्योंकि एक ही कंडीशन है ना आपके पास. फाइन, अदरवाइज you can also find the dimension of the m by the another way. How? M is a collection of x1, x2, x3, x4. I can substitute the value of the x1 is x3, x2 becomes x2, x3 becomes x3, x4 becomes x4. How many vectors are there? So number of Li vectors, they are my 3. So the dimension of the m is my 3. Look at the next one. V is the R vector space of the real valued functions defined with the inner product. S is the
set of 4 functions. W is the subspace spanned by the S. Which of the following statement is are true? Basis. How you can prove about the basis? Your target is to check firstly by Li. Fine. How you can prove the Li? There are the two methods. Firstly, I can see is a cos x, sin x, cos square x, and sin square x. Can you write cos x with the help of the remaining elements, or can you write any element of the S with the help of the remaining elements, or you can say can you write cos x with the help of the remaining elements? Definitely not, because cos square x को ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो आप 1 plus cos 2x by 2. It is 1 plus cos 2x, but we need a cos x. So none of the element can be written with the help of the other elements. So yes, they are my Li. So once they are Li, yes, they are the basis because already spanned है आपके पास. Fine. Second way, otherwise second method क्या है? आप पहले वाले वेक्टर को अल्फा से मल्टीप्लाई करिए. Then second vector will be alpha 2 into sin x plus alpha 3 into cos square x plus alpha 4 into sin square x is 0. Now you can substitute x is 0, x will be pi by 2, x will be pi by 6 and so on. And you will see alpha 1 0, alpha 2 0, alpha 3 0, alpha 4 0. Once all are my 0, that means they are Li. The first option is the correct option. Look at the second options. Orthonormal. That means your target is to prove norm is 1 and any two elements in the basis S must be 0. Fine. But you can see, अगर मैं cos x ही ले रहा हूं, what is the norm of the cos x? That will be 0 to pi. The square of this element, cos square x, that will be my pi over 2, which is not 1. That means they are not orthonormal. Fine. So the second option is cancelled. There exists f and g in the S such that they are orthogonal. Definitely, because we know cos x and sin x. What is the value of the f comma g? Pi by 2, 0 to pi cos x sin x. By using the orthogonal property of the cos and sin, it is my 0. Yes, there exists. Fine. S contain the orthonormal basis. Is it possible? We all know the norm of the cos is pi by 2. Similarly, norm of the sin x is again pi by 2. So that means again you can write as a norm of the sin 4, sin square and cos square is not equal to 1. So which is not orthonormal. Right answers are A and C are the correct answers. Okay, consider the real vector space V equate with the inner product. W is the subspace of the V consists of all those polynomials of degree less than equal to 2. Can you find the dimension of the W? Dimension of the W is my 3. Fine. W dimension of the orthogonal complement. देखिए जब भी orthogonal complement है आपको dimension से चलिए हमेशा. Fine. Dimension of the, what is the dimension of the V? Dimension of the V is my infinity. It is my 3. So therefore dimension of the orthogonal complement is infinite. So ये fourth option तो आपका correct हो गया. W and W orthogonal complements has the same dimension. That's wrong because dimension of the W is 3, orthogonal complement is 3, infinity. Similarly, because if it is true, then what is the dimension of the orthogonal complement? 1, which is not infinity. Now once they are orthogonal complement, we all know by using the direct sum. Fine. So that means any element in the V, x4, any element I can choose x4 is the element in the V. I can write x4 is the element of the W
plus, so what does it mean? x4 minus p is a part of, fine. So yes, there exists A and D are the right answers. Okay, look at this next one. Consider the inner product, define the norm. P is given as alpha plus beta x square minus 30 x4. The polynomial P is orthogonal to all those polynomials whose degree is less than equal to 3. That means inner product of the P and 1 0, inner product of the P and x is 0, inner product of the P and x square is 0, inner product of the P and x cube is 0. Fine, that is the meaning of the orthogonal. Then the value of the alpha and beta will be. You can see whenever you will see minus a to a, f is my 0. That means f must be odd. Fine, the similar way you can see. Now, because p is my even function, आप अपनी कैलकुलेशन को आसान करोगे ना, तो फंक्शन को देखिए पहले कैसा है. तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन. तो ये ओड कैसे बन सकता है? इन दोनों में से कोई एक ओड हो जाए. p इज ऑलवेज द ओड, तो इसका मतलब ये चीज तो कभी भी हमेशा ही 0 आएगी, ये चीज भी हमेशा ही 0 आएगी. फाइन. तो अब आप पहले इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, p और 1. और अगर ये इवन है, अगर ये फंक्शन इवन है तो ये ट्वाइस हो जाएगा 0 से a ऑफ फंक्शन. तो ये इवन है, 1 के साथ करेंगे तो ट्वाइस, ट्वाइस को मैं उधर ले जाऊंगा और p को इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से 1 में. सो दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा ओवर 3 माइनस 30 over 5, that is a 6 is 0. Fine. Similarly, x square के साथ करेंगे, इसको x square से मल्टीप्लाई करते हैं and then integrate them. x square alpha over 3 5 means now it's a beta over 6, sorry 4 divided by, so 4 के integrate करेंगे, that's a 5 and it's a 6 means that's a 7. Fine. Now how you can solve them? I can multiply this number by 1 over 3 and subtract them. So you will get beta is 1 over 9 minus 1 over 5 minus, उसको right side पे ले जा रहा हूँ, it's a 2 and it is my minus plus 30 by 7. Fine. So it's a 5. So इसका LCM कितना हो गया? 14. 44 over 7. LCM is my 9 5 is 45 divided by 5 minus is a minus of 4. So that is a 11. Is it okay? It is my 2. This is my 30 divided by 7. कुछ गलती हुई है कैलकुलेशन से, एक बार चेक कर लो. It's a 6 by 7. So fine. So 1 over 3 it's a 1 over 9 1 over 5. So कितना हो गया? minus 11. 11 into 45 is 495 divided by 7. सॉरी, नेगेटिव दोनों को माइनस करेंगे ना तो ये नंबर माइनस हो जाएगा. सो दैट इज अ 14. तो 14 दैट्स अ माइनस 16 over 7. सो इट्स अ 4. सो 4 into 45 दैट इज 180 डिवाइडेड बाय 7. फाइन. तो जैसे आप वैल्यू इसमें फिल करोगे, फाइन, यू विल गेट अल्फा इज minus 18 over 7. Now you can substitute the answer. Alpha plus 5 beta. Alpha is my minus plus 5 times. 5 times is 900 divided by 7. And if you solve them, you will get 126 is the right answer of the problem. ये लेक्चर मस्त सुनिए बच्चे, ये हमेशा ध्यान रखिए इन लेक्चर्स को. दैट इज अ ग्राम-श्मिट प्रोसेस, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स. ये आपको हेल्प करेगा पूरे कंपटीशन एग्जामिनेशन. कंसीडर द वेक्टर स्पेस ऑफ द कंटिन्यूअस इंटरवल्स 0, पाई. डिफाइन द fn स्पैन्ड बाय इनर प्रोडक्ट भी. ऑर्थोनॉर्मल्स, ऑर्थोगोनल भी. सबसे पहले ऑर्थोनॉर्मल की बात कर लेते हैं. fn और fm के साथ इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं. 2 over पाई 0 to पाई. fn की वैल्यू, फाइन. fm भी यही होगा. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो जाएगा. सो दैट विल बी साइन ऑफ
nx sine of mx. Fine. Now it's a 2 over pi. You have the two cases, either m is equal to n is equal to m or n is not equal to m. By the orthogonal property of the cosine function or the sine function, this is 0 and this number is my pi over 2. तो जब आप इसको ओपन करोगे पाई ओवर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सो दैट नंबर विल बी माई 1 एंड 0. फाइन. तो इससे क्या मिला, जैसे ये 1 है तो इसका मतलब ये ऑर्थो नॉर्मल हो गया आपके पास, और ये नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स दे आर ऑर्थोगोनल. फाइन. सो f1 f2 f3 आर ऑर्थोनॉर्मल. फाइन. बट दे आर नॉट ऑर्थोनॉर्मल. अगर ऑर्थोनॉर्मल है, ऑर्थोगोनल है, दैट मीन्स दे आर Li ऑल्सो. सो ईच ऑफ द fi's डायमेंशन इज 3, बट यहाँ पे डायमेंशन 2 कह रहा है आपको. फाइन. नाउ f4 इज इन द v में होगा कि नहीं, इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं. फाइन. अब हमने ये प्रूफ कर दिया कि दे आर ऑर्थोगोनल. तो ऑर्थोगोनल में आपका अल्फा 1 कैसे निकाल सकते थे आप, f4 f1 डिवाइडेड बाय f1. तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी है, 0, बिकॉज n इज नॉट इक्वल टू m. सिमिलरली अल्फा 2 भी 0 हो जाएगा, अल्फा 3 भी 0 हो जाएगा. इसका मतलब f4 को आप लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पाओगे. सो दे आर नॉट स्पैन्ड बाय द f1 f2 f3. राइट आंसर इज ओनली बी इज द करेक्ट आंसर. मोर ओवर सिर्फ ओनली वन करेक्ट ऑप्शन था, वो हमें पहले ही मिल गया था. ओके. yi's are the orthonormal. What is the meaning of that? yi comma yj in a product is 0 and norm of the yi must be 1. Fine. Which of the followings are the orthonormal? तो क्या होना चाहिए, अगर ये आपका फर्स्ट आंसर ऑर्थोनॉर्मल है तो इसको कहां से डिवाइड होना चाहिए, इसकी लेंथ से. इसकी लेंथ कितनी है, 1 and 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय √2 होना चाहिए. लेकिन यहाँ तो 1 है नीचे, फर्स्ट ऑप्शन कैंसल. सिमिलरली सी ऑप्शन कैंसल. इसको चेक कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 विच इज 5. फाइन. 16 plus 9 25. Fine. 1 1. Yes, correct. 1 1 1. That's correct. So B and D are the right answer of the problem. Moreover, you can also check whether the dot product, that is 3y1 4y2 over 5 and 4y1 minus 3y2 over 5, ये 0 आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा. ऑर्थोगोनल भी तो होना चाहिए ना. सो LHS से स्टार्ट करते हैं. सो दैट इज 12 over 25. y1 into y1 is 1. This is y1 and y2 which is my 0. y2 and y1 is 0 minus 12 over 25. y2 into y2, that is a 1 0. Fine. So yes, B and D are the right answers. V1, V2, V3 are orthonormal basis. Again, norm of the each Vi is 1 and Vi dot Vj is my 0. V is the matrix whose columns are V1, V2 and V3. What does it implies? V is my orthogonal matrix. Fine. Once V is my orthogonal matrix, that means V into V transpose is identity as well as V transpose into V. So first option correct, second option correct, third option wrong. How you can find the determinants? Can you find the eigenvalues? We all know the eigenvalues of the orthogonal matrix are plus minus 1. Therefore, determinant of the matrix is the product of the eigenvalue, which is my minus 1, which is non-zero. Determinant is a non-zero is the right answer. A, B and D are the correct answers. Consider the orthonormal. Fine. Always remember, orthonormal implies orthogonal. Fine. Given that the vector u
is such that the inner product of the u with the v1 is my 1, inner product of the u with respect to v2 is my 2, inner product of the u with respect to v3 is my 3. They are orthonormal, that means norm of the each vi is my 1 and vi dot vj is my 0. Fine. Now since the vectors are my orthogonals, how you can find the coefficients a, b, c? A is nothing but u comma v1 divided by v1 v1. Similarly, v is my second component, v2 divided by v2 comma v2. C is my third component, I can write as a u comma v3 divided by v3 v3. Now you can substitute the value. This is my 1, norm is my 1. Similarly for the second, 2 over 1 2. This is 3 over 1 is 3. So can you find a square plus b square plus c square? 1 plus 4 plus 9. 14 is the right answer of the problem. Student, if you are really interested to watch more videos from my side, you must like and comment on the videos. Fine. चलिए, and तभी तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि आप वाकई इस वीडियो से बेनिफिट ले रहे हो. Then I will upload the next video soon. Let's say n is my 2. Fine. So A is my 2 cross 2 orthogonal matrix. Fine. Which of the following statements are necessarily true? I think that's very simple. Fine. इसको क्या लिख सकता हूं मैं? There are two methods by using the topological space, or you can see the norm. I can write this number is x A transpose into AY because they are on the real matrix. Fine. What is the A transpose into A? Is identity. You can write this number is x into y. Fine. Or instead of that, how you can define the norm? I can define the norm x comma y is x transpose y on the matrix. So I can write this number is ax transpose into ay. I can open that. It's x transpose a transpose a into y. What is the value of the a transpose into a? That is identity. So I can write this number is x comma y. So yes, A answer is the correct answer. Look at the second. Eigenvalues of the A. So we all know the eigenvalue of the orthogonal matrix are plus minus 1. A is diagonal because the eigenvalues are my distinct. Fine. And once the eigenvalues are my distinct, then yes, they are diagonal over R. Remember, only for the R, not for the complex numbers. Look at the third. Because your matrix is orthogonal, so that means each row, or you can say each columns are orthonormal. Fine. So each row of the A are orthonormal. All are my correct answer of the problems. Okay, फिर से n की वैल्यू 2 ले लेते हैं. Fine. Let v1 v2 are my orthonormal basis. A is my 2 cross 2 formed by the column vectors. That means A is my orthogonal matrix. So once it's orthogonal matrix, that means A into A transpose is identity, which is same as A transpose into A. Fine. So look at the first part. A is equal to A inverse, wrong. A is transpose is wrong, which is the same. I can multiply by A. Again, eigenvalues are my plus minus 1. So the determinant of the matrix is product of the eigenvalue, which is minus 1. But he said plus 1. That's a wrong answer. C is the correct option of the problem. मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, these lectures are must and must watch. Let W1 and W2 is the subspace of this. Can you find the dimension of the W1? This is
0, that is a nullity. Fine, 0 है ना, nullity होगा. So that is 3 minus 1 condition है, that is my 2. Similarly, dimension of W2 again 0 है, so we have to find the dimension of the nullity, that is a 3 minus 1 condition, which is my 2. W is the subspace of the R cube such that W intersection W2 is the span. W intersect, okay, what is the meaning of the intersection? That means 0, 1 and 1 must part of the W, 0, 1 and 1 must part of the W2. तभी तो intersection में जाएगा ना, ये दोनों का पार्ट होना चाहिए, यानी you can see 0, 1, 1 satisfied. Also, W intersection W1 is orthogonal to the W intersection W2, that is 0, 1 and 1. इसका orthogonal है, that means dot product will be 0. Then which of the following is there? तो सबसे पहली कंडीशन तो हमें मिली 0, 1, 1 must be the part of the W, but you can see the second option 0, 1, 1 तो बन ही नहीं सकता यहाँ पे कभी भी. Fine, because the first element 0 चाहिए ना आपको, but the first element is not 0. 0, 1, 1 is fine. Again, you can see from this case 0, 1, 1 is not possible. If you subtract them, लेकिन second element आपको 1 चाहिए, but in the second element is my 0 always. तो B and D option तो आपके cancel हो गए. Clear बच्चों? Now, अब A और C में से W intersection W1, W आपका है 0, 1 and 1. Fine. अब इन दोनों में से पहले चेक कर लेते हैं, इनमें से कोई W1 में सेटिस्फाइड हो रहा है. सम इज अ 1, सम इज अ 0, सम इज 0, सम इज 0. फाइन, ये तो आपका W हो गया, दिस नंबर इज माई W. फाइन, इसका मतलब ये एलिमेंट क्या होगा? दिस एलिमेंट मस्ट बी द W1. फाइन, दिस एलिमेंट मस्ट बी माई W1. इज इट ओके? तो अगर ये मेरा फर्स्ट, पहले मैं C केस की बात करता हूं, तो 1, 0 minus 1 is a part of the W1. Fine. Then what is the W intersection W1? अगर W मेरा ये है, then what is my W intersection W1? यही रहेगा अकेला 1, 0 minus 1. So now we will see whether the dot product are 0 or not. Can you find the dot product of 0, 1, 1 and 1, 0, 1? 0, 0 minus 1, which is non-zero. इसका मतलब C ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया. अब A ऑप्शन को देख लेते हैं. A ऑप्शन में इसका मतलब 0, 1 एंड -1 इज अ पार्ट ऑफ W1. फाइन, अगर ये आपका W है एंड ये आपका W1 है, तो व्हाट इज द इंटरसेक्शन? W intersection W1 is my 0, 1, -1, and you can see the dot product with the 0, 1 and 1, 0, 1 and -1, 0 satisfied. Yes, A is the right answer of the problem. Clear? समझ गए? चलिए, look at the next one. V is the vector space of all those polynomial of degree at most 2. Dimension of the V must be 3. Inner product is defined. Can you find the dimension of the W? This is span of the two elements. Find W. Can you find the dimension of the W complement? V minus dimension 1. Is it okay? Is it okay? V is the all those polynomial of degree 2. तो orthogonal complement क्या होगा? इसके अलावा सारी एलिमेंट्स भी. Also, we all knows W and W orthogonal complement must be 0. तो एक एलिमेंट उठा लेते हैं W में से कोई भी. फाइन, अब H इज एन इवन, कोई भी एक इवन ले लेते हैं अपार्ट फ्रॉम दी टी स्क्वायर. फाइन, बिकॉज ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में टी स्क्वायर वाली पॉलिनोमियल नहीं आएंगी ना. सो लेट्स से T4. क्लियर? सो क्या ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को सेटिस्फाइड करेगा? दैट मीन्स 1 माइनस टी स्क्वायर एंड T4. क्या ये 0 होगा? नो. यू कैन सी 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू T4 विच इज नॉन जीरो. बट इसका मतलब H इवन फंक्शन तो नहीं हो सकता, बिकॉज अगर इवन फंक्शन है तो इसको सेटिस्फाइड होना चाहिए था. अगर ओड फंक्शन है तो लेट्स से H इज माई T क्यूब,
तो फिर भी ये नहीं सेटिस्फाइड होगा, बिकॉज 0 to 1 1 minus t square of t cube, which is my non-zero. So h is not an odd function. h of 0 is 0, that's again wrong. अगर मैं कोई फंक्शन ले लेता हूं, let's say t cube plus constant, फाइन, कांस्टेंट को हम ऐसा चूज करें जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए. सो ये, लेकिन h of 0 is 0, not satisfied. So the only option is C is my right answer. Let H is a usual inner product space. फाइन, तो क्या डिफाइन करें हम? F और G के साथ डिफाइन कर लेते हैं. लेट्स से F and G is defined as 0 to pi, because domain is my 0 to pi, F into G dx. Then they are linearly independent, orthonormal, orthogonal, and so on. So let's say start with the UN UM. तो ये कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 to pi, UN की वैल्यू ये है और UM, so that will be 2 over pi sin NT sin MT. Fine. 2 over pi is outside. Now, by using the orthogonal property, we have the two cases when n is equal to m, when m is not equal to m. अगर n and m they are not equal, the answer is 0. When they are equal, the answer will be half of the limit. So that means this number is 1 and 0. Whenever n is equal to m, n is not equal to m. What does it mean? They are orthogonal. Whenever both are same, that means they are orthonormal. And once you prove that they are orthogonal, that means they are Li as well. But he said not Li. He said not orthonormal, but we have proved that they are orthonormal. He said not orthonormal basis. Fine. Basis, why? Because Li is also the basis. So it's an orthonormal basis. Yes, D is my right answer of the problem. Let again n है, पहले आसान कर देते हैं इसको. Fine. These are my unit vectors. That means norm of v1 is 1, norm of v2 is my 1. ऑर्थोगोनल है ऐसा कुछ नहीं बताया, इसको भी खोल के लिख लेते हैं. नॉर्म ऑफ v स्क्वायर इज, पहले v1 के साथ v1 कॉमा v प्लस v2 के साथ. फाइन. which of the following is the correct statement? v1 and orthogonal, that means आपका टारगेट है v1 और v2 को 0 प्रूफ करना. बेसिस है, that means अगर ऑर्थोगोनल प्रूफ हो गया तो बेसिस भी हो जाएंगे, एंड सो ऑन. सो कोई भी एक v ले लेते हैं. लेट्स से v इज इक्वल टू v1. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया? नॉर्म ऑफ v1 स्क्वायर, v1 एंड v1, नॉर्म ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 v1. Fine. So what does it mean? v2 and v1 are my 0. That means they are my orthogonal. So first answer is correct. Once they are orthogonal, that means they are Li also. Li means that is a basis also. They are not at most 2 minus 1 1, but हमें तो सारे मिल गए ना आपको. So that's a and b are the right answer of the problem. Consider the inner product space of the polynomial at most 2 with the inner product f0, f1, f2 are orthogonal. That means f0, f1 is 0, f0, f2 is my 0, f1, f2 is my 0. These are given to you. Fine. Find the values of the CIs and then get the answers. So they are given to you. सबसे पहले करते हैं f0 f1. f0 f1 दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इंटीग्रेट 0 to 1. So that number will be 1 over 2 plus c1 is equal to 0. तो c1 की वैल्यू आ गई आपकी -half. फाइन. सेकंड करते हैं f0 and f2. f0 f2 इस
ओके f0 एंड f2 फाइन। तो क्या होगा ये टी स्केयर इज 1/3। ये क्या होगा f0 f1 f0 f1 की वैल्यू तो 0 ही है आपके पास, तो c2 के साथ तो आपका 0 हो गया, प्लस c3 की इंटीग्रेशन c3, तो इसका मतलब c3 की वैल्यू आपकी हो गई -1/3। फाइन। नाउ f1 एंड f2, f1 f2 की वैल्यू फिल कर लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस c2 f1 c3, f0 की वैल्यू 1 है तो इसको मैं साथ में f0 लिख लेता हूं। इसका क्या बेनिफिट होगा, यू कैन सी व्हेन आई स्टार्ट विद f1 f0, फाइन, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी f1 f0, दिस वैल्यू इज माई 0, फाइन। तो चलिए f1 एंड ft स्क्वायर, f1 को करते हैं मल्टीप्लाई टी स्क्वायर के साथ, तो टी क्यूब इंटीग्रेशन इज 1/4 c1 इंटू टी स्क्वायर, सो c1/3 प्लस c2 इज आउटसाइड, f1 इंटू f1 स्क्वायर की इंटीग्रेशन कर देते हैं, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, so t square is my 0, so c1 we have obtained the c1 is -half, so it is 1/4 minus 1/6. Well, limits are from 0 to 1. Fine, if you substitute 1 minus half is half. Fine, sorry, it's a f1 into f1 square, तो f1 square तो पहले होगा ना, क्यूब हो गया, सॉरी। Fine, so half 1/8 is 1/24. When you substitute 0, it's a minus plus 1/24. Fine, so 12 is the LCM, it is 1/12 plus c2/12, so that means c2 will be my -1. Now you can substitute the answer, twice of c1 -1 -1, so minus of 3 is the right answer of the problem. Okay, look at this next one. X is in a product space, orthogonal complement, best approximation. Always remember students, whenever your target is to find the best approximation, your target is to find the projection. Fine, so your target is to find the projection of y is my t cube, y की वैल्यू t cube दे रखी है ना, on what is the polynomial is t square. फाइन, तो क्या हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ टी स्क्वायर ऑन, फाइन, डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर कॉमा टी स्क्वायर इनटू टी स्क्वायर पे निकालना है ना, तो इसके ऊपर डेफिनेशन लगा दो नॉर्म की इन अ प्रोडक्ट, सो इट इज 0 to 1 t⁵5, 0 to 1 t⁴, तो ऊपर वैल्यू होगी 1/6, नीचे 1/5, दैट इज 5/6 इंटू ये टीज के साथ में, तो 5/6, बी इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. चलिए, नाउ वी विल लुक अबाउट द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑन द ग्राम-श्मिट प्रोसेस. फाइन, अगर आप ये लेक्चर्स इस क्वेश्चंस को करना चाहते हो शॉर्टकट ट्रिक से, तो ये 15+ एग्जांपल जरूर सुनिए पहले. फाइन, चलिए, अब जब भी ग्राम-श्मिट प्रोसेस आए हमेशा दो चीजों को चेक करिए, जितने भी वेक्टर हैं इसके u एंड v, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए. फाइन, और इसकी लेंथ जो है वो आपकी 1 आनी चाहिए. इज इट ओके? और u एंड v आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए. फाइन, अब सबसे पहले क्या करना है आपको, आसान तरीका बता रहा हूं, 5 सेकंड गिन लेना, पहले एक बार समझ लो, उसके बाद 5 सेकंड गिन लेना, आपके आंसर 5-5 सेकंड में आएंगे. पहले वेक्टर को लिख लिया, थोड़ी से दूर करके सेकंड वेक्टर को लिख लो आप, 1 1 -1. इज इट ओके? अब सबसे पहले इन ऑप्शन में से वो ऑप्शन सारे डिस्कार्ड कर दीजिए जिसमें पहला वेक्टर 1 1 1 डिवाइडेड, इसकी लेंथ कितनी आएगी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज √3. इसमें वो ऑप्शन कैंसिल कर दो जिसमें पहला वेक्टर 1 1 1 डिवाइडेड बाय √3 नहीं है. सेकंड ऑप्शन कट गया. फाइन, कोई डाउट यहां तक? चलिए, ठीक है. अब इसमें से वो ऑप्शन सारे कैंसिल कर दीजिए जिसका डॉट प्रोडक्ट आपस में 0
नहीं आ रहा, ठीक है। लाइक √6 तो एलसीएम हो जाएगा 2 -1 -1 0 सेटिस्फाइड, 1 1 -2 सेटिस्फाइड, 2 2 -4 सेटिस्फाइड। इसमें तो कोई कैंसिल नहीं हुआ। अब इसमें वो ऑप्शन कैंसिल कर दीजिए सेकंड वाले वेक्टर में से, बिकॉज पहला वेक्टर तो मिल गया ना आपको। वो ऑप्शन सारे कैंसिल कर दीजिए। जैसे ये √6 से है तो इसका 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, √6 सेटिस्फाइड हो गया। इसमें भी 1 + 1 + 4 सेटिस्फाइड हो गया। दिस विल बी 4 + 4 + 16, ये 3 नहीं आया आपका, फाइन। तो ये आपका ऑप्शन कैंसिल हो गया, ठीक है जी, क्लियर। नाउ अब सी और डी में से कैसे कैंसिल करोगे आप? लुक एट दैट, फर्स्ट और सेकंड वैल्यू सेम है, थर्ड सेम नहीं है ना, माइनस का डिफरेंस है। फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू आर सेम। नाउ लुक एट द वेक्टर्स, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू सेम है वो रख लीजिए, जिसका सेम नहीं है वो कैंसिल कर दो। लुक एट दैट, 2 and 1 not same, fine. So C, D option cancel. C is the right answer, fine. दोबारा करता हूं अब आपको कैसे आप इसको 15 सेकंड में सॉल्व करोगे। फर्स्ट वेक्टर को लिख लीजिए 1 1 1, सेकंड वेक्टर को थोड़ा दूर करके लिख लीजिए 1 1 -1। फर्स्ट वेक्टर जिसकी लेंथ से डिवाइड कर दो आप इसका √3, तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। ये दोनों वेक्टर सेम है, दैट इज अ फर्स्ट एंड सेकंड आर सेम। लुक एट द सेकंड वेक्टर, जिसमें फर्स्ट और सेकंड वेक्टर सेम नहीं है, सो यू कैन सी फोर्थ ऑप्शन कैंसल, दे आर सेम, फाइन। अब इन दोनों ऑप्शन में से जिसमें आपका लेंथ सेम नहीं है, 4 + 4 + 16 which is not equal to 3, this option cancel, 1 + 1 + 4, that is my √6 satisfied. C is the right answer. Is it okay? This is the first method. Second method is, instead of this, what you can do is, I can write again the first vector 1 1 1, and this is 1 1 -1. I can write minus of the second vector again, fine. Find the dot product. What will happen? 1 + 1 -1, which is 1, divided by the length will be 1 square + 1 square + 1 square, 3. Now you can solve them. It is 2/3, then 2/3, then -4/3. इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन सही हो गया, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। इट इज 1 1 -2, नाउ डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ। जिस तरह से पहले ऑप्शन कर रहा था ना डिवाइड बाय लेंथ, वही चीज यहां करेंगे। अब आपका ये ऑप्शन फिर से कैंसिल हो गया। ओके, लुक एट दिस वन, एस आर द वेक्टर्स। सबसे पहले चेक करते हैं वेदर दे आर LI और नॉट। आई कैन राइट द वेक्टर इज 1 1 1 2 -1 2 1 -2 1. So find the determinant. It is 1 into -1 + 4, -1 into 2 -2, +1 into -2 +1. So that will be, is it 1? ये सही लिखा, कुछ गलत तो नहीं हो गया, फाइन। So that is my 3, this is 0, this is my -1. कहीं गलत हुआ है लिखने में, 2 -1 2, 1 -2 1. So it's a -1, it's a +4, fine. Then it's a 2 -2, fine. It's a -4, it's a -4, fine. Then it's a 3, which is 0. इसका मतलब these vectors are my LD. So the rank of the matrix S is my 2. तो इसका मतलब S और T, rank of the S is 2, तो rank of the T is also 2. तो जिसमें 3 वेक्टर है वो तो पहले कैंसिल कर दीजिए आप, फाइन। अब आप कोई 2 वेक्टर ले लेते हैं, फर्स्ट 2 कॉलम से ले लेते हैं। द फर्स्ट इज 1 1 1, थोड़ा दूर करके लिख लेते हैं 2 -1 2.
फर्स्ट वेक्टर में डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, √3, जिसमें नहीं है वो कैंसिल कर दो, सब में है. अगेन यू कैन सी फर्स्ट वैल्यू एंड द थर्ड वैल्यू सेम, first value and the third value are same, so you can see first value and third value same, first value and the third value is not same, cancel, first value third value is not same, cancel. A is the only option which is left behind is the correct answer. अदरवाइज कैसे निकालोगे, माइनस करके फर्स्ट वेक्टर को दोबारा लिख लेते हैं 1 1 1, बिकॉज द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए, कितना आ गया 2 -1 +2, so that will be 3 divided by the length, तो कितना आंसर हो गया 2 - 1 is 1, 3 -1 is a minus of 2, 2 - 1 is 1, so 1 - 2 1, इसकी लेंथ किससे डिवाइड करेंगे 1 + 4 + 1, that is the √6. A is the right answer of the problem. ये ग्रैम-स्मिथ प्रोसेस, these lectures are very important for you. Fine. कमेंट करके बताइएगा जरूर कि क्या लेक्चर आपको हेल्पफुल है कि नहीं है. अगेन द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बोला है, पहले डायमेंशन चेक कर लेते हैं. व्हाट इज द रैंक ऑफ द एम, क्लियरली से दीज टू रोस आर सेम, तो डिटर्मिनेंट इज 0, रैंक ऑफ द एम इज माई 2. तो पहले जिसके 3 वेक्टर हैं वो कैंसिल कर दो आप. क्लियर. अब आप देखते हैं पहला वेक्टर क्या आपका ट्रांसपोज पे लेना है आपको, मतलब कॉलम वाइज 1 0 0, सेकेंड आपके पास 1 1 1, तो फर्स्ट वाला वैल्यू क्या होगी डिवाइडेड बाय द लेंथ, तो पहला वेक्टर 1 0 0 1 0 0 सेटिस्फाइड. अब इन दोनों में से पहली वैल्यू सेम है, तो एक वैल्यू से तो इसको 1 0 0 लिख लिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए 1 डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड, तो ये कितना आंसर हो गया 1 - 1 इज 0 1 1, तो किससे डिवाइड करेंगे इसकी लेंथ से भी 0 1 1, ये तो 0 0 1 आ गया. फाइन, सो द ओनली ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर. देख 15 सेकंड लग रहे हैं कि नहीं लग रहे. चलिए देखते हैं. ये u1 u2 u3 है आपके पास, इसमें सब में 3 ही है तो चेक करने की जरूरत नहीं है. li फर्स्ट वेक्टर को लिखते हैं 1 1 0, सेकेंड वेक्टर को लिखते हैं 1 0 0, इसको किससे डिवाइड करेंगे पहले √2, तो ये सी ऑप्शन में √2 लिखा नहीं हुआ. फाइन, बाकियों में सही है. इसके लिए क्या करेंगे माइनस, फर्स्ट वेक्टर को लिख लिया 1 1 0, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए, दैट इज माई 1 डिवाइडेड बाय द लेंथ, मतलब इसका स्क्वायर, दैट्स 2, तो ये कितना आंसर हो गया 1 - हाफ हाफ -हाफ 0. फाइन, और इसको मैं क्या लिखता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 - 1 0. क्लियर. और इसको डिवाइड किससे करेंगे हम √2 से. 1 - 1 0, ये तो 1 0 0 है सेकेंड वेक्टर, 1 - 1 0 1 - 1 0. ठीक है जी. थर्ड वेक्टर, अब इसको क्लियर कर देते हैं. ये क्या आ गया 1 - 1 0. फाइन जी. अब थर्ड वेक्टर लिख लेते हैं 1 1 1. अब इसको पहले फर्स्ट वेक्टर के साथ और फिर इसी तरह से माइनस सेकेंड वेक्टर के साथ. तो पहले इस वेक्टर का फर्स्ट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करिए, इट इज 2 डिवाइडेड बाय द नॉर्म 2, माइनस इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करिए 0 डिवाइडेड बाय 2, ये तो 0 ही हो गया, सो दैट विल बी 0 0 1. सो यहाँ पे 1 1 1 आया आपके पास, दैट इज रॉन्ग. 0 0 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. कैपिटल टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. सो पहले इसकी मैट्रिक्स बना लेते हैं, x y z y z x 0 1. फाइन. सो इसका डिटर्मिनेंट से रैंक देख लेते हैं, सब में 2 है तो बेसिकली 2 ही आएगा इसका रैंक. फाइन, 1 - 0 माइनस ऑफ 1 1 विच इज 0. सो 2 वेक्टर आएंगे, फर्स्ट वेक्टर इज 1 0 -1, सेकेंड इज 1 1 0.
तो पहली वाली लाइन किससे डिवाइड होगी आपकी? √2 से। तो सभी में √2 है, फाइन। लेकिन √2 भी कैसा चाहिए? फर्स्ट और लास्ट वाले में। लेकिन यहां तो सॉरी, फर्स्ट फैक्टर x प्लस वाई कॉलम वाइज लिखा, आपने कॉलम वाइज लिखा था ना, कॉलम वाइज लेते हैं। सो 1 1 0 0 1 1, तो ये डिवाइडेड बाय √2 होगा ना ये। सो यहां देखिए नेगेटिव आ गया ना, आपको तो पॉजिटिव चाहिए, रेस्ट आर सेम, फाइन। अब इसमें क्या करना है आपको? माइनस, इसमें कोई वैल्यू सेम नहीं ना आपकी, 1 1 0, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिए, 1 डिवाइडेड बाय द लेंथ 2, तो ये कितना बन गया आपका? -½ 1 -½ एंड 1, फाइन। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, -1 1 2, क्लियर। तो ये इसकी लेंथ किससे डिवाइड होगी? ये 4 + 1 + 1 √6, इसमें √6 नहीं है, उसको कैंसिल कर देते हैं अभी, फाइन। और मोर ओवर आप इसमें देखोगे -1 1 2 चाहिए, लेकिन यहाँ पे सारे 1 1 1 है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। ये अगेन 1 1 1 है, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 -1 -2, so C is the only option which is left behind. Let V is the inner product space, VI's are the orthogonal set, that means VI VJ is my 0. Then which of the following statements are my true? This is a recent 2023. The vectors are extended to the basis, so they are orthogonal. Orthogonal means Li. चलिए पहले मैट्रिक्स बना के देख लेते हैं whether they are Li or not. 1 1 2 V2 + V3 V2, फाइन। सो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो गया? 3, विच इज माई नॉन जीरो, हेंस दे आर Li. Once they are Li, you can extend it to the basis by using the Gram-Schmidt process. Second, which is a similar, can be extended to the orthogonal. तो पहले चेक करते हैं क्या ये orthogonal है कि नहीं है. How you can check about the orthogonal? You can find the dot product. क्या ये 0 आ रहा है? 0 + 1 + 2, which is non-zero. इसका मतलब they are not orthogonal. अगर ये orthogonal ही नहीं है तो you can never extend it to the orthogonal basis. Look at the third one. Again you can write as a matrix 1 1 2 0 1 1 2 1 3. So now it will be 3 - 1 2 0 1 - 2 1 - 2. Clearly say it's a minus of 2, it's a plus of 2, 0. That means they are linearly dependent. Once they are linearly independent, it can never be a basis. Third option is also cancelled. Now look at the fourth option. 1 1 2 2 1 1 2 1 3. So we will check 3 - 1 is 2, minus of 2, 3 - 2 is 1, plus of 2, 1 - 2 is -1. So clearly say which is non-zero. If they are non-zero, that means they are Li. So by using the Gram-Schmidt process, you can extend it to the basis. So A and D are the right answer of the problem. Similar kind of the questions I had explained in the 15+ examples of the Gram-Schmidt process. Okay, which of the following is not orthonormal? फाइन. सो फिर से उसी तरह से कर लेते हैं. फर्स्ट वेक्टर क्या आपका 1 0 0 1 0 1 0 1. नॉट ऑर्थोनॉर्मल में क्या होना चाहिए आपका? vi.vj 0 नहीं होना चाहिए, या फिर लेंथ ऑफ द vi जो आपकी 1 नहीं आएगी. देन वी कैन से दे आर नॉट ऑर्थोनॉर्मल. फाइन. चलिए क्या करें, इसको किससे डिवाइड होगा? पहली वाली वैल्यू √2 से. ठीक है, तो इसमें कौन सी नंबर √2 से डिवाइड नहीं है? सारे हैं. इसमें दोनों नेगेटिव है ना, तो बात एक ही है. माइनस फर्स्ट वैल्यू लिख लेते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए. सो दैट इज अ 1 डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी आ गई इसकी? 2.
तो ये कितना हो गया, -12, 1 0, 1 - ½ इज हाफ, सो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -1 2 0 1, तो ये किससे डिवाइड होगा आपका, 4 + 1 + 1 √6, तो चेक कर लेते हैं, -1 2, इसको √6 बना लेंगे ना, -1 2 0 1 सेटिस्फाइड, -1 2, इसको √6 बना लेंगे 2 के साथ, -1 2 0 1 सेटिस्फाइड। ये गलत हो गया, देखिए लास्ट नंबर पॉजिटिव चाहिए लेकिन ये नेगेटिव है, इसका मतलब दिस इज नॉट दी ऑर्थोगनल, दिस इज नॉट दी ऑर्थोनॉर्मल, ये सही है, आपके पास नेगेटिव से हो गया। मोर ओवर यू कैन सी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए, वो ये नॉट इक्वल टू आ जाएगा आपका, फाइन। सो सी इज दी राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। यू कैन सी इट्स अ recent year paper, how many seconds you are needed. Okay, look at this another one. Find the distance over the span. Always remember students, whenever your target is to find the distance over the span, always apply the Gram-Schmidt process. How? Very very simple. Just पहले समझिए कंसेप्ट को, उसके बाद शॉर्टकट ट्रिक्स अप्लाई करते हैं। एक वेक्टर लिख लो, आपका क्या है ये 1 1 0, दूसरा वेक्टर कहीं भी लिख लेते हैं आपका 0 1 1, और ये डिस्टेंस लेना है आपको 1 1 1 से, 1 1 1 से, ठीक है जी। इसका कोई नाम ले लेते हैं, दिस इज O से A, क्लियर। नाउ अब आपको क्या करना है, इन दो वेक्टर्स की हेल्प से एक वेक्टर जनरेट करिए, दैट्स अ स्पैन। आपको स्पैन चाहिए ना, तो इसका स्पैन कैसा होगा, ये होगा ना कोई स्पैन, फाइन। तो क्या आप B का कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, तो स्पैन से कैसे निकलते हैं कोऑर्डिनेट, α1 ऑफ 1 1 0 पहला वेक्टर, α2 ऑफ सेकेंड वेक्टर, तो क्या आ गए कोऑर्डिनेट ऑफ द B, α1 + α2 एंड α2, ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए B के। नाउ योर टारगेट इज टू फाइंड द डिस्टेंस, तो ये आपको डिस्टेंस निकालना है। सो योर टारगेट इज टू फाइंड द डिस्टेंस BA. Is it okay? Now you can see from the diagram what is the BA. BA को मैं लिख सकता हूं OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। OA कितना है आपका 1 1 1, OB वेक्टर कितना है दिस वेक्टर, सो इफ यू सब्ट्रैक्ट देम इट्स 1 - α1, 1 - α1 minus α2, 1 - α2. Is it okay? Now अब your target is to choose α1 and α2 in such a way that the vector BA is orthogonal to the given vector u1 and u2. अगर orthogonal है तो that means the inner product must be 0. इस तरह से आपको वेक्टर α1 α2 चूज करना है, so that inner product with respect to the u1, inner product with respect to the u2 is 0, और स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट दिया ना, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। तो करते हैं, ये बी ए वेक्टर आपके पास है, इसको u1 के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो फर्स्ट 1 2 α1 minus α2 0, और u2 के साथ करेंगे 0 1 1, मतलब इन दोनों के एडिशन हो जाएगी, सो 2 minus α1 minus α2 is 0. इज इट ओके? अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, जैसे इन दोनों को सॉल्व करोगे एक तो क्लियर हो गया, α1 एंड α2 आर सेम, और जैसे सेम है किसी एक में फिल कर दो, यू विल गेट 2/3. सो बी कोऑर्डिनेट आपका क्या बन गया, α1 + α2, फाइन। अब आपको ए पता है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर, x2 y2 - y1 होल स्क्वायर, z2 - z1 होल स्क्वायर, सो दैट इज 1/√3. अब पूछा क्या आपसे, 3 × d स्क्वायर, 1 is the right answer of the problem. Okay, look at this another one. Again your target is to find the distance over the span. फिर से कर लेते हैं,
ये तो ऑर्थोनॉर्मल है ना, तो सिंपल बेसिस वाला ले लो, एंड दिस नंबर इज 1 -1 0 0। ये वेक्टर कौन सा दे दिया आपको, 1 1 1 एंड 1, ये स्पैन बना लेते हैं। फाइन, तो वेक्टर बी क्या होगा आपका, इसको अल्फा 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको अल्फा 2 से, सो दैट नंबर विल बी अल्फा 2 माइनस अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 1। फाइन, तो बी ए कितना हो जाएगा आपका, बी ए विल बी 1 1 1 माइनस ऑफ द बी 1 माइनस अल्फा 2 1 प्लस अल्फा 2 1 minus alpha 1 1 minus alpha 1. Now you can choose the alpha 1 and alpha 2 in such a way the given vector BAB is orthogonal to u1 u2. तो कितना हो जाएगा फर्स्ट वेक्टर, 2 minus 2 alpha 1 is 0 and it will be minus 2 alpha 2 is equal to 0. तो यहां से क्या मिल गया आपको, alpha 1 will be 1 alpha 2 will be 0. तो आपका वेक्टर B क्या हो गया, 0 0 1 1. Fine. So now can you find the distance between the B and A? 0 0 1 and 1. So basically B is nothing but my u1. Fine. So can you find the distance, x2 minus x1 plus 0 plus 0, which is root 2, and your target is to find the square of the distance. So 2 is the right answer of the problem. Fine. So these are the very simple question related to the Gram-Schmidt process and the orthonormal basis. You must watch about my these lectures. Let me know in the comment box आप next lecture किस topics पे चाहते हो. You can send in the comment box. I will try to upload the next lecture very soon. Till then you can share this video with your friends, like and comment on these videos. Happy learning always. Best wishes to the each one. Thanks for the watching.